Hello students, welcome to Unit 5 revision class of SST. So we will be starting with Geography Unit 5. So in this we will be studying chapter 6 named Natural Vegetation and Wildlife. Okay students? अब देखिए स्टूडेंट, जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है नेचुरल वेजिटेशन, तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नेचुरल वेजिटेशन? नेचुरल वेजिटेशन का मतलब होता है प्लांट्स दैट ग्रो नेचुरली इन एन एरिया विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस और असिस्टेंस। तो कहीं पे भी प्लांट अगर कोई इंसान ने नहीं लगाए हैं, अपने आप ही उगाए, उन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? उन प्लांट्स को हम कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है, उसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? उसका एग्जाम्पल है मैंग्रोव ट्रीज एटसेट्रा। मैनग्रोव ट्री सुंदरबन में अपने आप लग जाते हैं, उन्हें किसी इंसान ने नहीं लगाया है। ठीक है, तो डेट जिनको कोई इंसान नहीं लगाता, अपने आप कोई पेड़ उगाते हैं, उनको क्या कहते हैं? नेचुरल वेजिटेशन। और आगे बाद का नाम, हमारे चैप्टर का नाम है वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ का मतलब क्या होता है? वाइल्ड एनिमल्स दैट आर नेटिव टू अ रीजन। तो ऐसे एनिमल जो एक जगह पर रहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल क्या है इसका? एनाकोंडाज आर अ पार्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ फाउंड इन अमेजोन रेन फॉरेस्ट। तो क्या है, जो एनाकोंडा है वो सिर्फ अमेजोन रेन फॉरेस्ट में मिलते हैं, तो वो वहाँ के नेटिव हुए। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो है हमारा फैक्टर्स कॉजिंग डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। ठीक है, सो जो फर्स्ट फैक्टर है वो है रेनफॉल। रेनफॉल ही डिसाइड करती है कि किस एरिया में किस चीज़ का वेजिटेशन होगा। ठीक है, अगर जितनी ज़्यादा रेनफॉल होगी उतने ज़्यादा पेड़ होंगे, जितनी कम रेनफॉल होगी उतने कम पेड़ होंगे। ठीक है, तो रेनफॉल एक इंपॉर्टेंट रीज़न है रिलेटेड टू फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा एंड फोना का मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है हमारा सॉइल। अगर सॉइल कहीं किसी जगह की अच्छी होगी तो वहाँ पे प्लांट्स ज़्यादा होंगे, अगर वहाँ कहीं पे सॉइल अच्छी नहीं होगी तो वहाँ प्लांट्स नहीं हो पाएंगे। लाइक इन फर्टाइल रीजन्स देर आर लॉट ऑफ प्लांट्स, लाइक इन डेजर्ट रीजन, कि जहाँ पे डेजर्ट होते हैं, जहाँ पे मिट्टी सैंड वाली होती है, वहाँ पे प्लांट्स बहुत कम होते हैं। ठीक है, सो सॉइल डिपेंड करती है फ्लोरा एंड फोना को। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा फैक्टर है वो है ट्रेन। ट्रेन का मतलब क्या होता है? नेचुरल फीचर्स ऑफ लैंड लाइक इट स्लोप। स्लोप का मतलब ढलान, जो ऊपर जैसे पहाड़ों वाला स्लोप होता है। ट्रेन का मतलब कि कोई चीज़ प्लेन है या कोई चीज़ ऊपर पहाड़ की तरफ जा रही है, तो वो फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्लोरा एंड फौना के लिए। ठीक है, नाउ वी विल सी व्हाट इज क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेशन। वेजिटेशन को तीन तरीके से क्लासिफाई किया गया है। पहला है फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मतलब जंगल। दूसरा है ग्रासलैंड, जहाँ पे घास होती है। तीसरा है श्रब्स। श्रब्स का मतलब जो डेजर्ट्स में जो पेड़ उगते हैं। ठीक है, Types of forests. Hello students, we already know that a difference in climate and the type of land leads to differences in the natural vegetation of an area or region. Areas with high rainfall have forests, and there are many types of forests all around the world, like tropical evergreen forests, tropical deciduous forests, temperate evergreen forests, temperate deciduous forests, Mediterranean forests, and coniferous forests. Today, we are going to go on an adventure to explore two of these, the tropical evergreen forest and the tropical deciduous forest. Let's begin our journey by exploring the tropical evergreen forests. To find tropical evergreen forests, we need to travel to the tropical regions close to the equator. These regions are hot and get plenty of rainfall throughout the year. That's why tropical evergreen forests are also known as tropical rainforests. And do you know why they are called evergreen forests? Yes, it's because the trees in these forests don't shed their leaves altogether in one season. So the forest looks green all year round. Now, let's step into the forest. Even with the bright sun shining, it is dark in here. Can you guess why? Well, these forests are so dense that often the trees don't let sunlight reach the ground. Now, let's look at the plants and animals that are found here. Rainforests are rich in life.
They are home to about 50% of the world's terrestrial animal and plant species, even though they cover only 6% of the earth. In these forests, we find trees like rosewood, ebony, and mahogany. They are also home to chimpanzees, anacondas, jaguars, spider monkeys, toucans, sloths, and many more animals and birds. Did you know that the Amazon rainforest is the largest rainforest in the world? It is also known as the lungs of the world because of the amount of oxygen the trees there produce. But sadly, in 2019, the region saw thousands of forest fires that burned down large areas of this forest. These fires were linked with deforestation for industrial and agricultural purposes. They damaged homes of tribes living in the forest, killed animals, and gave out enough smoke to cover large parts of South America. But wait, our adventure isn't over yet. We will now visit our next stop, tropical deciduous forests. Like the name suggests, these are also found in tropical areas, but are a little away from the equator. These forests are found where rainfall comes in particular seasons, like the monsoon. So in the dry season, all the trees in the forest shed their leaves to conserve water. The word deciduous comes from a Latin word that means to fall down or fall off. So we can understand why these forests are called deciduous forests. Now, if we step into a tropical deciduous forest, we will find trees like sal, teak, neem, and shisham that are very useful for their wood. We might also come face to face with animals like tigers, lions, elephants, langurs, and monkeys. And with that, we reach the end of our exploration. I hope you had fun. सो स्टूडेंट्स, हमने ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में अभी जाना, ठीक है। तब इसके बाद 4 टाइप के फॉरेस्ट और बचते हैं, जो है हमारे टेम्परेट एवरग्रीन, टेम्परेट डेसिडियस, कॉनिफेरस और मेडिटेरियन, ठीक है। अब हम इनको भी डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट से। तो इसकी लोकेशन कहाँ है? लोकेशन है इसकी साउथ ईस्ट यूएसए, साउथ ईस्ट ब्राज़ील और साउथ ईस्ट चाइना, ठीक है। और ये फॉरेस्ट कहाँ पे आता है? ये फॉरेस्ट हमारा आता है सब ट्रॉपिकल रीजन्स में, जो है हमारा 23.5 साउथ और नॉर्थ के अंदर, ठीक है। अब इस फॉरेस्ट में कौन कौन से ट्रीज हमें मिलते हैं? इसमें हमें मिल जाता है पाइन, मिल जाता है, और यूकलिप्टस टाइप के ट्रीज हमें यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं एनिमल्स की, जो यहाँ पाए जाते हैं वो है हमारे मूज, रेंडियर, ईगल, आउल, अल्क एंड रकून, ठीक है। तो ये एनिमल्स यहाँ पे हमारे जो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर ज़्यादातर पाए जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। ये पाया जाता है नॉर्थ ईस्ट यूएसए, चिले, मोस्ट पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न चाइना एटसेट्रा। और ये डेसिडियस फॉरेस्ट कहाँ पे पाया जाता है? ये टेम्परेट जोन के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो टेम्परेट येलो में टेम्परेट जोन है, वहाँ पे ये पाया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे ट्रीज, ओक, ऐश और बीच के ट्रीज ज़्यादातर यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ की। वाइल्ड लाइफ में डियर, फॉक्स, वॉल्फ, पीजेंट एंड मोनाल जैसे यहाँ पे एनिमल्स पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे कॉनिफरस फॉरेस्ट। वो ज़्यादातर नॉर्थन अमेरिका, एंडीज माउंटेन, नॉर्थन यूरोप, हमारे हिमालयाज और नॉर्थन एशिया में पाए जाते हैं, ठीक है। और कॉनिफरस फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? मोस्ट ऑफ द रीजन वेयर फॉरेस्ट आर फाउंड और पार्टली नॉर्थन मोस्ट पार्ट ऑफ टेम्परेट जोन। तो टेम्परेट जोन के नॉर्थन पार्ट में ये वाले फॉरेस्ट हमें पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो ट्रीज पाए जाते हैं वो हमारे चिर, पाइन एंड केदार जैसे ट्रीज यहाँ पे पाए जाते हैं कॉनिफरस फॉरेस्ट के अंदर, ठीक है। और जो एनिमल्स यहाँ पे कॉनिफरस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं वो है हमारा सिल्वर पॉक्स, मिंक्स, पोलर बियर एटसेट्रा, ठीक है। अब जो हमारा लास्ट फॉरेस्ट है वो है हमारा मेडिटेरियन फॉरेस्ट। तो चलिए इसके बारे में भी जानते हैं।
ये फॉरेस्ट ज़्यादातर कैलिफोर्निया यूएसए या साउथ वेस्ट साउथ अमेरिका या मेडिटेरियन सी या साउथ वेस्ट अफ्रीका या साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये पाया जाता है, ठीक है। ये हमारे टेम्परेट जोन के अंदर पाया जाता है और यहाँ पे बहुत गर्मी होती है और बहुत ड्राई समर्स होते हैं, ठीक है, और रेनी विंटर्स होते हैं, ठीक है। मेडिटेरियन फॉरेस्ट की जो ट्रीज उसमें पाए जाते हैं वो ज़्यादातर फ्रूट के ट्रीज पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑरेंज बहुत मिलेंगे, फिग, ऑलिव, ग्रेप्स वगैरह बहुत मिलेंगे, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है ऑर्चिड्स ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि ये बहुत सारे फ्रूट्स इस एरिया में पाए जाते हैं, ठीक है। Includes two types of regions, tropical deserts or hot deserts and polar regions or cold deserts. Let us first learn about the tropical deserts. They are located on the western margins of the continents such as the Sahara Desert in Africa and the Great Indian Desert in Asia. These regions have extremely hot and dry weather. The vegetation cover here is scarce. The most commonly found plants in tropical deserts are cactus and brittle bush. We already know that the leaves of these plants are in the form of thorns. This reduces the amount of water lost by the leaves and helps the plants survive in the dry weather of the tropical deserts. Animals that can survive in extreme heat and can go without food and water for longer durations are found here. Therefore, camels, scorpions, coyotes, foxes, and vultures are the most commonly found animals of tropical deserts. We learned that as we go to higher latitudes, we find coniferous forests. But what do we find if we go to even higher latitudes? In the higher latitudes, beyond the coniferous belt, we find the tundra type of vegetation. It grows in the polar regions of northern Europe, Asia, and Northern America. This region is marked by extremely cold climatic conditions. Due to the extreme climatic condition of the region, the growth of vegetation is very limited here. Plants grow only during the short summer season and includes mostly mosses, lichens, and small shrubs. The wildlife in polar regions comprise of seals, walruses, musk oxen, snow owls, polar bears, and snow foxes. The animals found in the polar region have thick fur or skin. Can you think why? Yes, to protect them from the extreme cold, just like a sweater. So today we learned about thorny bushes found in hot deserts and polar regions. In tropical deserts, the climate is extremely hot and dry. The vegetation cover is limited to cactus and brittle bush, and animals like camels, scorpions, foxes, and vultures are commonly found here. In polar regions, the climate is extremely cold. The growth of vegetation is extremely limited in these regions. Only plants like mosses and lichens grow during the short summer season. Animals with thick skin and fur, such as polar bears, seals, walruses, and snow foxes are found here. Bye. Means of transport. Before the invention of modern transport, people used to take days to travel from one city to another. Merchants on the Silk Route traveled for weeks and months to take their goods from one country to another. But today, the story is different. Transport has developed in such a way that the world seems much smaller. No place is too far and no journey is too long. But how and when did these developments take place? Let's go back in time and see how transport has changed over the years. We know that transport refers to the system or means by which people and goods are moved from one place to another. Over time, transport has changed and evolved in many ways. Earlier, humans used to travel long distances by walking or with the help of horses and mules or using boats to cross water bodies. The invention of the wheel
enabled us to create carts, carriages, and trains. Over time, we have further developed these inventions to help us cover long distances even faster. Today, transport has evolved in unimaginable ways. People have invented self-driving cars that use artificial intelligence and don't need a driver to be at the wheel at all. And now, we are working on building hyperloops. These are a mode of transport which have large pods that race through tubes that have almost no air in them. These can be used to transport people at a speed of up to 1,200 kilometers per hour. At this speed, you would be able to go from the northernmost point of the Indian landmass to its southernmost point in about 2.5 hours. That is even faster than a passenger plane. These are some amazing inventions that will be part of our lives soon. But today, there are 4 means of transport that we commonly use. They are roadways, railways, waterways, and airways. Today we will learn a little bit more about the first 2, that is, roadways and railways. Roadways are the oldest mode of transport. They are highly useful for covering short distances. While there are different vehicles that we use to travel by road, roads themselves can be of many different types. They can be metalled or pakka roads paved with tar or concrete, or unmetalled or kacha roads made of mud and dirt. Roads can be built underground or even underwater as subways or tunnels. And they can be built at a height as flyovers and bridges. Technology has enabled us to build roads of all sorts. Take for example the Miller Viaduct in France, which is the tallest bridge in the world. Or the 7-mile bridge in the USA, which is a highway through the sea. Our very own Leh-Manali highway has been built through the steep Himalayan mountains. Over the years, India has developed a huge road network across its landmass. As of 2017, we have 58,97,671 kilometers of roads across India, making it the 3rd largest road network in the world, second only to the USA and China. Another important means of transport is railways or trains. Trains move on tracks. They are best suited for transporting people and heavy goods over long distances cheaply. Trains have evolved from engines that ran on steam, which was generated by heating water using coal, to trains that run on diesel and electricity. Today, there are trains that use magnets and run at very high speeds. These are called maglev trains. They float just above the tracks due to magnets and can travel at 600 kilometers per hour. Trains are the most common means of transport in India. The Indian railway system is also the 3rd largest in the world, again, second only to the USA and China. Its massive network includes local trains, metros, and even intercity trains. About 8 billion trips or 800 crore trips are undertaken every year using the Indian railways. So today, we saw how transport has evolved over the years, from the humble wheel to advanced hyperloops. We also saw how roadways and railways help connect different parts of our country. The evolution of transport has made sure that even the farthest point from us on Earth is only hours away to reach. This is nothing short of amazing. Bye-bye, happy learning!